Hello friends, so I welcome you all in this discussion, and in today's discussion we basically solve the one question from the linear algebra, which is very interesting question, right? And before that I would like to share one thing. There has a two types of classes run on Unacademy, जिसमें आपको पता है कि 20 आवर्स का हर मंथ में फ्री स्पेशल क्लास ले रहा हूँ, राइट? और इस स्पेशल क्लास में आपके सारे ही पेपर इंक्लूड हैं। ये हर मंथ 20 आवर्स का आपको स्पेशल क्लास मिलने वाला है। इसके अलावा मैं 50 आवर्स का पर मंथ स्पेशल क्लास के अलावा ये प्लस कोर्स में आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स आल्सो, राइट? और जिसमें सारे ही पेपर्स आपके कवर होने वाले हैं, चाहे वो लीनियर हो, चाहे रियल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे मॉडर्न हो, चाहे ओडीपीडी हो। इसके अलावा टोपोलॉजी, न्यूमेरिकल मेथड, इन सारे ही पेपर्स को हम इंक्लूड किए हैं इस क्रैश कोर्स में। और इस 20 आवर्स का जो स्पेशल क्लास है इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जबकि जो 50 आवर्स का कोर्स है यानी क्रैश कोर्स, उसमें मैं बेसिक से एडवांस हर चीज़ कवर करूँगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, असाइनमेंट भी आपको मिलने वाला है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इस 20 आवर्स का जो फ्री स्पेशल क्लास है जो कि ऑलरेडी रन कर रहा है और ये फ्री है, और आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिए। मेरे साथ इन सारे प्रॉब्लम्स को, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, चाहे वो CSIR के हों, चाहे गेट के हों, चाहे IIT जैम के हों, उन सारे प्रॉब्लम्स को मेरे साथ सॉल्व करिए। चलिए एक और फीचर्स मैं बता देता हूँ, बाकी फीचर्स तो है ही हैं। इस अनअकैडमी में एक नया फीचर ऐड किया गया है, रेज ए हैंड ऑप्शन। यहाँ पे आपके अगर कोई भी डाउट है तो लाइव इस ऑप्शन को यूज़ करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, राइट? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ देखिए, एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे प्रॉब्लम हम देखते हैं, राइट? और इस क्वेश्चन को पहले देखिए। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपका CSIR, गेट, IIT जैम तीनों ही एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली गेट से लिया गया। वेरी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन। नाउ सी हाउ यू कैन मिनिमाइज योर टाइम इन द एग्जाम, राइट? M be 3 × 3 matrix and suppose that 1 2 3 are eigen values of M। ये देखिए आपका 1 2 3 इसका आइगन वैल्यूज दिया है। इफ ये कंडीशन दिया है M इनवर्स इज इक्वल टू M स्क्वायर बाई अल्फा माइनस M प्लस 11 बाई अल्फा, राइट? हियर इट इज गिवन M इनवर्स इज इक्वल टू M स्क्वायर बाई अल्फा माइनस M प्लस 11 बाई अल्फा इंटू I3, राइट? तो आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा फॉर सम अल्फा नॉन जीरो देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट अबाउट दिस अल्फा वैल्यू, राइट? सो आपको देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स पहले से ही दिया है, एम मैट्रिक्स विच इज बेसिकली व्हाट 1 2 3, इट्स आइगन वैल्यू इज 1 2 3। और देखिए यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। पहले आपको समझना पड़ेगा हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम इनवर्स, एम स्क्वायर, राइट? देन यू कैन सॉल्व इट। नाउ you know one important property of the eigenvalues. If here it is basically given uh, M has eigenvalues what? M has eigenvalue 1 2 3, right? Then if you want to find out the eigenvalue of minus M inverse, right? M inverse basically, then it is what? 1, right? It is, you just do the inverse of this 1 by 2 and 1 by 3, right? In the similar way, if you want to find out the eigenvalue of M square, it will be what? M square means you just do the square of this, that is 1 square, comma 2 square, comma 3 square. Are you getting my point? So now see, we just put this value in this equation. What is the equation? The equation is basically, and there is one more thing. Again I repeat, you have to do the smart work, otherwise it will create a big problem, because M inverse, it is basically this 1 by 2 1 by 3, right? M is 1 2 3, so we can create a matrix. This is basically what? M is 1 2 3. I am just writing only the diagonal position, because you have the eigenvalues, you can easily find out the corresponding matrix. Now M inverse, it will be what? Again 1 by 2, and this is 1 by 3. And what about M square? M square, you can easily basically write this is also 1 4 and 9. Now one more thing,
if you put this value in this equation, right, what you will get? M inverse. First you have to put this M inverse. This is basically our objective is to find out the value of alpha, right? Now once you put this value 1, 1 by 2, 1 by 3, and this will be equal to 1 by alpha, and this is m square. Just see this equation, this is m square. So m square value is what? 149, and plus this sorry, this is minus, I think. Yes, this is basically, here it is given minus m. So minus m is what? 1, 2, 3, right? And all these rest of the position are 0. Plus 11 by alpha, and this is basically what? I3. I3 means identity matrix 1, 1, 1, right? And try to understand how we can solve this question. Now if you add each one, right, there has a 3 equation. You will add this with this, then this, right, and then this. So this is the first equation. In the similar way you can apply for this one and get the another equation. In the similar way, this is the third equation. Now since alpha will satisfy all these 3 equations, so we can easily solve this for only equation number 1. Why? Because it contains only the 1, so you can very easily solve this question, right? So 1 is equal to this 1 by alpha into 1, so this is basically 1 by alpha. This is minus 1, right? And this is plus, once you multiply by this, plus 11 by alpha. Now one more thing, either you can just take all these 3 equation, or you can only solve this by equation number 1 only, right? You can do both of the things. Since alpha satisfy all these 3 equation, we can use this technique. So now once you move on this left hand side 2, and this will be 1 by alpha plus 11 by alpha, so it will be 12 by alpha. So finally we get alpha is equal to what? 2, right? 2 6 ja 12. So finally you are getting here the second option is correct. So these type of problems are very important, right? And these are analysis type question where you have to put some value, analyze how we can reduce the time. Just try to understand. If you think I can solve each of these equation and get the value of this alpha, then it will take more time, and in the exam you have to save the time. ठीक है, तो ऐसे आपको टाइम भी सेव करना, प्रॉब्लम की भी सॉल्व करना, और ये सारी टेक्निक तभी आएगी जब आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे, राइट? सो आप अनअकैडमी पे भी आ सकते हैं, जहाँ पे हम फ्री स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं। और आपका फ्री स्पेशल क्लासेस में मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं जो है 1000 जो प्रॉब्लम यूट्यूब पे सॉल्व कर रहा था उसको कंटिन्यू कर दिया हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथ जैसे यूट्यूब पे लाइव आके आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वैसे ही आइए मेरे साथ लाइव सॉल्व करिए फ्री। और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है तो उसके लिए भी है, क्रैश कोर्स के लिए भी, राइट? स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्स दोनों ही रन कर रहे हैं। जो आपको लगता है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका फ्री स्पेशल क्लास तो सबके लिए है, प्लस कोर्स में अगर आपको ज्वाइन करना है तो वहाँ से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। So now see one more thing at the lastly I say you, there has a 2 type of classes, free special class and plus course. In this plus course I am taking the all the paper, right? Means linear, real, complex, ODPD and modern, right? Apart from this you will also get the minor paper like numerical method, topology, right? LPP. So if you are interested to join this course, you can join this course also. You can use my code SirVivek10. You will get 10 to 15% discount on this Unacademy, right? Apart from this 20 hours per month कोर्स विच इज़ अंडर द फ्री स्पेशल क्लासेस, ये आपको फ्री मिलने वाला है। इस पे आइए, ये देखिए यहाँ पे फ्री स्पेशल क्लासेस, ये 20 आवर्स आप फ्री जस्ट आप डाउनलोड करिए, मेरे साथ आइए, लाइव इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये ऑफ़र लेना है तो इस समय ये ऑफ़र 6+1 मंथ के लिए अनअकैडमी ने इंक्रीज़ कर दिया है, और ये ऑफ़र है आपका 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, राइट? और अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं तो 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, राइट? तो ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि चाहे
जिस भी लेवल का हो, चाहे CSIR का है, चाहे गेट का है, उन सारे ही प्रॉब्लम्स पे अगर आपको कमांड करना है, कमांड मीन्स कि आप सारे प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए मेरे साथ ज्वाइन करिए, वो सारे प्रॉब्लम्स को फ्रीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।